इन सच डीप, मतलब इतना डीप पढ़ा रहा हूँ शेप्स को, वरना मैं तो ऐसे ही। चलो और एक काम करते हैं ना, इन द शेप वी हैव वन मोर ऑप्शन। फिल का तो हो गया हमारे पास, बट फिल में देयर इज वन मोर ऑप्शन दैट इज नोन एज अ पिक्चर। नाउ सी, इफ आई वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर हियर, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं इंसर्ट पिक्चर करता हूँ, तो आई विल क्लिक ऑन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वी हैव सम डिफरेंट टेक्सचर्स, सो यू कैन इंसर्ट इट फ्रॉम हियर। बट इफ यू वांट टू इंसर्ट योर ओन पिक्चर, देन क्लिक ऑन दिस पिक्चर सोर्स हियर from file. So click on from file and now let us insert a real image. ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, so that मैं आपको समझा सकूँगा। So online of office work, online classes. Now, अब जैसे मैं इसे insert करता, could you see this? Picture is inserted inside the shape now, isn't it? Yes. Now, Yes, sir. आपको नहीं लगता ये shape थोड़ा, sorry, ये image थोड़ा सा मतलब चपटा हो गया? This is not a real ratio of the image, right? Now, if you want to correct the image का ratio, see how to do that then. ये offset दिख रहा है आपको? Could you see this offset here? Yes. Yes, sir. Try to Sir, click once on. again insert picture, sir. Sure. देखो फिर से insert करते हैं। Shape आ गया ना? ठीक है? Click on Yes. this picture. ये देखो picture में आया, ठीक है? फिर यहाँ पे insert picture पे जाओ. Click on this insert picture. Here you will get from file. Click on this from file and you can choose any image. ठीक है? Like rather than choosing this image, let me choose some other image. तो मैं चलता हूँ desktop पे. Desktop पे what I'm going to do, I'm going to choose one of this. चलो, let me choose this. यहाँ पे insert करते हैं. Now आपको दिखा? ये आ गया यहाँ पे image, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But कहीं ना कहीं if you could see, let me insert that image again directly, ठीक है? ताकि आपको पता चले what is the difference happening. Now, don't you think there is a difference between the ratio of the image, this circle वाला and this वाला, है ना? Yes, sir. अब ये गंदा दिख रहा है ना? Now we want to adjust this, right? तो use Yes. offset, ठीक है? तो अब मुझे bottom से थोड़ा सा उसको नीचे करना है, तो देखो अगर आप माइनस पे जाते हो तो see it is working now. Take it to Yes, the exact size. और टॉप पे भी करना चाहते हो, you can top पे भी उसे करके you can adjust your image. Now it is okay. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Look, सिर्फ picture insert करना is not important in a document. ठीक है? It has to be in a perfect ratio. समझ में आया? Yes, sir. चलो. Now, once it is done, now you can also insert some more things in a shape, like यहाँ पे select कर लेते हैं. Select करने के बाद, next is picture के बाद we have a pattern fill. So here we have different patterns. So you can fill any one of this pattern if you want. You can change the colors, like it has two colors, right? So you can change the colors, like blue and then orange, so it will convert in the same manner. समझ में आया ना? Yes. Clear यहाँ तक फंडा? Yes, sir. Okay. Now let us do something else. Now, as you could see, this picture has a blue color का border here, right? Now let us work with the borders. यहाँ पे चलते हैं. Could you see this line here? दिख रहा है? Sir. Yes, sir. This is the line that you will also get here. देखो यहाँ पे outline है. So you can change the outline color. देखो अब ये orange color का हो गया. If you want to change the thickness of that line, देखो you can change from here also. ठीक है? Yes, sir. Now, if you want to make it like different styles, तो आप यहाँ से भी change कर सकते हो. But I don't like this all dotted. I like this one only. And अगर आप उसको चाहते हो कि there should be no outline, then click on this no outline here. See, समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Now let us create something using the shape. I hope the topics are clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. But apart from this, look, इसमें कुछ और भी options है. Format में जाके फिर shape में जाओगे ना, you will get this shadow effects. ठीक है? I hope you could see this shadow effects, right? देखो यहाँ पे दिख रहा है? You can make it glow. You can make it a little bevel in this वाला thing. समझ में आया ना?